Thank you for the kind introduction. Am I audible to everybody? Yeah. I know it's like just before the lunch time, you must be hungry. So I'll just try and finish it fast. But at the same time, I would like to take as much time as possible to convey the message that I want to convey. So I don't want to rush into it. At the same time, in the interest of time, I'll try and finish it in time. So wherever I feel I need to spend more time, I'll definitely spend more time. And yeah. So today I'm going to talk about 4 pillars of generating all-weather returns. So what are the 4 pillars? What is all-weather returns that I'm going to define in the presentation to come? He's introduced me already. I'm a founder of Compounding Wealth Advisors LLP, and my company is 4.5-year-old, and we are into long-short investment advisory. I'm a SEBI registered advisor, and we advise clients on running systems. And previously I was, for 20 years, I was managing Naman Securities prop desk, doing variety of things that can happen in prop desk. So that's about myself. This is what, it's a very small sentence, but it's a very powerful sentence. It's by Bob Mercer from Renaissance Technology. He says, we are right 50.75% of the time, but we are 100% right 50.75% of the time. And billions of dollars can be made this way. So what in stock market, basically what we need is a slight edge. And once we find that edge, we need to continuously exploit that edge. So beyond the point, money making becomes really, really boring because you have found your edge and it's repetitive. Like every time you do the same thing and you make money, and tomorrow morning, day after tomorrow morning, you come to the market, you know your edge and you do the same thing. So beyond the point, it becomes boring, but it is in a way $1 billion idea if you find your edge and you exploit it on a consistent basis. And those of you who don't know who Bob Mercer is, Bob Mercer is a part of Renaissance Technology headed by Jim Simons. And they have exemplary 33 years record of more than 65% return per annum every year on an average basis, and not a single year negative. And you are talking of US market, which are mature market. And he's saying that if a small edge in the market can give you a lot of money. Well, what is the inspiration for my presentation to say? These are the 2 gentlemen who has inspired me to do what I'm doing today for myself and some of my clients. This gentleman, Jim Simons, both of them don't need any introduction. And this gentleman has generated 66% per annum for 33 years. So to generate some 20%, 30%, 40% on some odd years, some you may generate 80%, maybe 100%, but to generate something on a consistent basis for 30, 35 years, and even Ray Dalio has generated around 14, 15, 16% on a consistent basis for more than 24, 25 years, and without any negative year in between. That is an exemplary. So this inspired me to look into what is the secret source behind this kind of return, because you are talking of very high return. And the moment you talk of a high return, like people are very skeptical, like ये कुछ fraud तो नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, 50-60% return possible नहीं है, 80% नहीं आ सकता है. लेकिन these gentlemen have generated, and they are not frauds. They are doing legitimate business. They are trading the market day in, day out, and they have generated this kind of return. So I peeped into it, and I found a lot of interesting stuff which I'm going to share now. So on the similar lines, I made presentation in August 2021, our Algo convention, online convention, where the topic of my presentation was how to trade like a hedge fund, how to think like them, and actually how to make money like them. So summary of those of you who have not attended, I'll just quickly take 2 minutes summary of what I had presented in that particular presentation. Why do hedge funds actually succeed? Because they make optimum use of leverage. So fortunately, worldwide and even in India, exchanges provide a lot of leverage. Like for example, when you say there is a 10% margin in Nifty, which essentially means if you put down 10 rupees,
you will be able to buy Nifty worth rupees 100. So essentially you are getting 10 times leverage. Hedge funds use maximum use of leverage. They diversify across class and across various strategies. They do a lot of data mining. Just the other presenter Nitish was saying, like, you need to make sense out of data, okay? You have tons and tons of data, and if you can make sense out of it, and you trade those data based on patterns and whatever parameters you want to trade, probably you will make money. And जैसे अभी मिलन भाई ने बोला, robust risk management and hedging mechanism. That is the key where scalability is possible. Because if you have an edge but your positions are open and suddenly something happens, you can actually go bankrupt. So for a hedge fund or a proprietary desk or an individual client to get successfully scale the business, they need proper risk management and hedging mechanism. Same way they need a lot of multiple correlated strategies and all that. So these are some of the trades where if you do all this, probably you are in for a all-weather kind of return. So when I'm eyeing for an all-weather kind of a return, I want to define what is an all-weather. What is an all-weather return? Can anybody throw light? What do you think of all-weather return? Across all cycles. So cycles can be like monthly, yearly, maybe decades. Okay. Anybody else? What is an all-weather return? Okay. Anybody else want to contribute to this? So, yes, gentlemen. Teji market, Mandi market, and sideways market. Teji market, Mandi market, and sideways market. So, this is what my definition of an all-weather return is. Returns irrespective of market conditions, whether it is bullish, whether it is bearish, whether it is sideways. This is very key because most people make money on the bull side, and in the first round of correction, they lose all money. And they lose a lot of money in sideways market. We don't want that, so that is why we will trade all three markets. Consistent return year after year. So when I'm saying all-weather return, I don't want to look at a negative year. I want to look at every year which is positive. But in the quest of finding higher returns and the quest of finding year by year return, I don't want to take unlimited risk. So my risk has to be limited. Fourth one is my volatility of return has to be reasonable. Like there cannot be a huge mark-to-mark swings on a daily basis. Like many of people are not able to take these swings and ultimately they end up giving the system. So I want to have returns with minimum volatility. And finally, last but not the least, जो अभी मिलन भाई ने समझाया था, we don't want to face any risk of ruin. मुझे जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे वाला बात है. If you have chips, you can play. तो risk of ruin नहीं चाहिए. तो whenever you want to have a position which are open in the market, you will always have a risk of ruin. Suddenly something will happen overnight. Suddenly something can happen intraday also. कुछ algo का गलती हो गया, कुछ आपका गलती हो गया. Suddenly the other day NSE exchange closed for four continuous hours, and all of us who are trading intraday, उनका position काफी open रह गया था. And उस दिन market खुलते ही market ऊपर जाने लगा. ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन कि मार्केट पहले ऑलरेडी अच्छा था, आपका पोजीशन बिल्ड हो चुका है, एंड इंट्राडे आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, इट्स लाइक 3:30 को तो अपन कब काट के ही जा रहे हैं या तो हेज करके जा रहे हैं. 4 hours सडनली टेक्निकल स्नेक कैम एंड एक्सचेंज बंद हो गया. और गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स ड्यूरिंग दोज 4 hours ओनली, and there is a huge gap down and market closed for the day or something like that. So your whole life's work is ruined. So what we don't want is a risk of ruin. So these are the 5 important objectives with which we'll be trading the market. I know a lot of people will be kind of, here is long-term investors. How many people invest for long-term here?
So quite a few. So what is long term according to you, Sovit? What is your long term? For me, though, there's no definition of a long term. So any time frame you're looking at when you're investing for I look at monthly time frames. No, but how many years you look to? Around 1 year. 1 year. Okay, that is more than 1 year is your long term. What about you, Santosh bhai? Kitna? 15 years. Okay, anybody else who want to beat his record 15 years? 200 saal, okay. So yes, you have a structured product, you can say that, and we'll come to that, your structured product, of course. Yogesh bhai, you want to add something? What is your long term, sir? Forever. So he's beaten everybody. आपने 200 साल बोला, उन्होंने forever बोला है. So this gentleman, योगेश भाई बोले या अपना गोविंद जी बोले या ये बोले या अतुल सूरी थे या राकेश झुंझुनवाला है, वो सब आउटलायर है. मेरे लिए आउटलायर है. आई एम एन एवरेज पर्सन and I cannot hold for 15-20 years, and I cannot see the side effect of a long-term investing. This is not me, of course. It is good for people. A lot of people have created wealth, but when I see index going down 50%, मैं position hold नहीं कर पाता हूँ. And 99% of us are not able to hold the position, no matter what. I've seen a lot of people squaring their portfolios in March 20. I've seen a lot of people squaring up their portfolio in 2008, 2001. Right at the bottom, their uncle point is reached and they liquidate and they go to safety. And the process of compounding is kind of disrupted. So in the words of James Keynes, in the long run, everybody is dead. So we want to generate return in our very short term of life, and in the long term, everybody is dead. I'm going to throw some statistics which is kind of between 1929 and 1954, Dow Jones was at the same level for 25 years. So anybody telling you कि आप 3-4 साल 5 साल इन्वेस्ट कर लो तो पैसा बनता ही है. Anybody telling you कि 6-7 साल SIP कर लो पैसा बनता ही है. There will be patches in indices. Forget about stocks. तो इसमें तो काफ़ी कंपनियां तो bankrupt हो गई होगी या ट्रेड ही नहीं होती होगी. 25 years तक. अच्छा कोई बोलेगा चलो ये तो शायद हो सकता है कि there is a downturn and economic growth is not happening, but during the same period economy has grown by 141%. So there is a case of economy growing, GDP growing, but index remaining almost at the same level for 25 years. I don't know how many of us, like most of us, like are a product of last 15-20 years of bull phase that world has seen, maybe the India has seen, and GDP has growth and EPS has grown and all that. We are a product of that. So we are kind of prejudiced towards our recent memory. But if you go into the past and look at the data, the second page that came कि चलो ये तो हो गया, तो market mature नहीं था, World War II हुआ 1945 में, तो हो सकता है वहाँ World War II के कारण ये हुआ. It repeated after so many years, 1966 and 1982. मतलब जो index 1000 के करीब था, it became 800 and it took 16 years. So no matter what strategy you were doing, you are still not making any money, you are still underwater. Let's go to the US में हुआ, let's go to some other country. It happened in Japan in 1989. 1999 they made a top of 39,000 and currently they are trading at 27,000. You are talking 32 years and economy has grown from 3 trillion to 5 trillion. Similar thing has happened in Shanghai. Shanghai made a top in 2008 at around what, 6,124, and currently it is trading at almost 50% discount to what, 2008 highs. तो यहाँ अपना 6,300 का अपना निफ्टी था. So my point is, when a country goes through a growth cycle and sideways cycle and a recession and a depression, so such patches will come in every country's life, and such patch can come in India's life as well. So हो सकता है अगला 10-15 साल रिटर्न नहीं आए, हो सकता है निफ्टी डबल भी हो जाए, लेकिन इफ समबडी इज टेलिंग मी कि इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है, 6% है, तो ये ईपीएस तो इतना ग्रोथ होने ही वाला है, उसके कारण इंडेक्स यही होने वाला है. सो that is to my mind, I'm skeptical about it. You will in our lifetime go through 10-15 years of a sideways correction where high will not be crossed for many years to come.
again, जैसे गोविंद मैंने बताया था, investing in indices, you go through the pain of 30, 40, 50% very, very regularly. And this data is not 5-10 year data, this is 10 and around 125 years data. You see you see these spikes of 45%, 45, very, very regular, 45%, 45%. And you see that 2008 here, on an index level, you have gone down by 90%. How many of us will be able to hold their position? Even if your horizon is 10 years, 15 years. Very few, and I am an average guy, and I presume 99% of the people here will be average. And at least I will not be able to take this kind of 90% drawdown. 45, 50, these are the drawdowns in index, forget about stocks. Let's come to our own Nifty. Nifty has delivered, say, I've taken this data because it's very recent data, and whatever is available intraday and all that, because all our backtesting happens from intraday time frame. So I've taken it from 2013, it's an ad hoc year. Your Nifty has returned around 12% per annum year on year. Okay, dividend वगैरह extra आता है, I have not counted that. And during the same period, maximum drawdown that has happened during this period is 39%. So my point is, to get 12% return, you are actually going through a pain of 39. So this has happened in index. Now some people will argue that we are a great stock picker, or we have a great PMS manager with us, and our returns are much higher than that. So I agree with them. चलो भाई, आपका कोई PMS manager हो, या तो आप खुद ही कोई smart, या तो momentum based, जैसे अंकुश ने बोला momentum based strategy चलता है, और या some other people can have their own way style of investing, fundamental research कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Then also your return is 28% and your pain is 45%. So when I look at return to drawdown number, it is still below 1, right? And actually we had picked up all the successful stocks of last decade. I presume that you guys are very sharp and you have picked up all winners only, there are no losers. फिर भी आपका return 28% है, फिर भी आपका drawdown 45% है. And the ratio is very, very unfavorable. Let us say mutual fund सही है कि नहीं है, ठीक है? These are the top 7 performing mutual fund in last 9-10 years, whatever the backtesting period is. उनका return है 18% and उनका drawdown है 34%. तो ये तीन चीज अपने ध्यान रखा. म्यूचुअल फंड देख लिया, we have seen stocks, we have seen indices also. मतलब ETF बोल लो, म्यूचुअल फंड सही है बोल दो, या तो स्मार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बोल दो, तीनों में ये रेशियो अनफेवरेबल है. रिटर्न टू ड्रॉडाउन इज बिलो 1. Let us see, suppose you are doing something systematic on your own, like what Ankush had presented last, or maybe Sovit has a system called Drashta, right? You have a long only system called Drashta, and a lot of people do factor investing and all that. Suppose you make some really decent system. This system based investing, these are our live models that we use. It has generated in last 20 years 27% as per backtested report, and it is near to smartest of the smartest portfolio managers, okay? And this is a very weekend kind of system. Every Friday just we scan it and we rebalance the portfolio every week. And churn is 2% per month, not more than that. So by putting in slight effort, you are able to avoid mutual fund fees, you are able to avoid low returns, you come near to this guy who is the smartest in the world in picking stocks. By putting in some effort, we have arrived at this system. Still we are just long only, we are not doing anything, we are just investing. So I'll take you to the 4 pillars of generating really, really high returns and with minimum risk. What are the 4 pillars? First is diversification. Second, non-correlation. I'll go into detail of each of them in the next slides. The third one is very, very important. Many people are afraid of using leverage, but believe me, if Jainam is today making
hundreds of crores, or any broker is making hundreds of crore, or any smart traders like Vishal Mehta or maybe Draviniti or maybe Santosh Pasi or anybody else is making upwards of 15-16%, anything above 12 to 15%, जो भी बना रहा है, they are using leverage in some form. If they are not using leverage, those kind of returns are not possible. Today, suppose you sell a put, for example. You pay a margin of, say, on a Nifty contract around 2 lakh, and Nifty value is around, say, 9 lakhs. So you have 5 times, 4.5, 5 times leverage. The same thing, suppose instead of selling put naked, suppose you cover it, make a spread. Your margin immediately reduced to around what, 65,000? So 65,000 means you are able to hold around 9 to 10 lakh worth of position. That means you are on almost leverage 12 times. ठीक है? तो this is also very important pillar. इसको ignore नहीं करना है, लेकिन इसका misuse भी नहीं करना है. If you misuse it, you are likely to blow up. But if you use it, you are likely to generate returns which are not heard of. And the last and not least is the hedging. So अच्छे दिन देखने के लिए we have to be alive, right? तो अपने को जिंदा रहना है. तो जिंदा रहने के लिए constant hedging ये करना ही करना है. आपको hedging के सिवा ये तीनों का कुछ भी काम नहीं है. If this is not there, this is incomplete. अगर ये नहीं है तो रिटर्न नहीं है. अगर ये दोनों नहीं है तो रिस्क कंट्रोल नहीं होगा. तो रिस्क कंट्रोल करने के दो तरीके हैं. One is final hedging. Otherwise, you can control risk through diversification, at the same time correlation. I'll show you how the risk is controlled that way. It is said in financial world, the only free lunch available in financial world is diversification. Otherwise, there are no free lunches. यहाँ कुछ भी आपको मिल रहा है, तो it has a cost. But diversification is absolutely free. आप कर सकते हो free of cost में. Diversification कैसे it actually leads to जनरेटिंग ऑल वेदर रिटर्न्स, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है. डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी वी हैव सीन एंड हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कौन से तरीके से किया जा सकता है. यू कैन डाइवर्सिफाई अक्रॉस असेट्स लाइक रियल एस्टेट है, गोल्ड है, डेट हुआ, इक्विटी हुआ. वी कैन एक्चुअली डाइवर्सिफाई अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स. what do I mean by instrument? Like equity is an instrument, derivative is an instrument. Within derivatives, options is an instrument, future is an instrument. Likewise, कल उठ के VIX आ गया समझो, VIX itself is an instrument. So anything which is traded and listed is an instrument for me. Whatever, tomorrow like in US and all, water futures have been listed, cotton is listed, some pork belly is listed. Anything which is listed is an instrument for me, and it's an asset for me, and it gives me some sort of a kind of a diversification. Then you can have diversification across strategies. Like abhi Nitish ne bhi bola, or some other speaker also said, you can have mean reverting, you can have trend following, you can have non-directional option strategy, you can have directional option strategy. Within directional or non-directional, you can have intraday, you can have positional. So that is the next diversification. There is diversification across time frame. तो आप ऐसा नहीं है कि आप खाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो. You are going as low as 1 minute chart also sometimes, or maybe HFT level का भी diversification हो सकता है. I am not into HFT, so I will not comment about it. So these are the kind of diversification that you do, and then finally, like you run a country risk. आपने सब ध्यान रख लिया, और finally आपका पूरा जो शॉप है वो श्रीलंका में है. Then again you are in trouble. So it is important, particularly for the wealthy people, to diversify across geographies. Suddenly, if you find yourself in the middle of Afghanistan or Sri Lanka or maybe Turkey, you can have billions of dollars going to zero in a single day, like what happened to India in 1947 at the time of partition. Like people having a lot of wealth here had to migrate to Pakistan, and a lot of people from Pakistan had to migrate here. So it is important to diversify geographically also and trade international market as well. So park some money outside also and trade all the instruments of the world. Like you have, like US market have hundreds of instruments that are available. That will give you diversification also, and that will kind of give you more strategies also.
So a simple example of how a diversification leads to all-weather return. We will not go into the percentage that we will be making, we will be understanding the concept. How a simple diversification can lead to generate return every year. So since our objective is to make return every year, अपना एक भी साल नेगेटिव नहीं जाना चाहिए. These are the assets that have delivered return every year, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 assets, and how they have been ranked as how they have been performing each year. Like 2012, mid-cap delivered highest return, and T-bill delivered lowest return. 2013, international equity delivered highest return, and lowest return was gold. So again, my presumption is I am an individual, I'm a very average person. I do not know when to buy which asset, how to time it. कभी gold अच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी real estate. I don't know. So I make a simple rule. I am going to trade this, invest in these 10 assets, and I'm just simply going to make an allocation. 40% to equities, 40% to debt, and 20% to between gold and real estate. सिंपल है, मतलब ये एडॉक नंबर है. ये करने के बाद क्या होता है इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ. लाइक आपने पहले ये देखा कि अगर आप सिंगल असेट में हो तो सपोज 2013 में गोल्ड में हो तो आपने नुकसान किया. कभी आप स्मॉल कैप में हो तो मिड कैप में हो, नुकसान हो गया आपको. लेकिन ये करने के बाद अगर आपने ये अलोकेशन कर दिया कि मैं चलो सेफ प्ले करता हूँ, मेरा रिटर्न इतना हाई नहीं आएगा, लेकिन ये अलोकेशन देने के बाद 40% में मैंने क्या किया, मिड कैप लिया 7.5%, स्मॉल कैप लिया, लार्ज कैप लिया, तो मेरा इक्विटी साइड हो गया मोटा मोटी 15-30% हो गया, रियल एस्टेट हो गया 10%, इंटरनेशनल इक्विटी 10%, मतलब इक्विटी साइड 40 हो गया, रियल एस्टेट 10, G-Sec 15, गोल्ड 10 करके मैंने 40-40-20 का मैंने पोर्टफोलियो बना दिया. एंड सी द इफेक्ट, पूरा साल पॉजिटिव हो गया. राइट, फ्रॉम इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन. एक भी साल में नुकसान नहीं है. बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है. सिंपल डाइवर्सिफिकेशन. जस्ट आई एम शोइंग यू एज एन एग्जाम्पल कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट यू आर इंश्योरिंग a moderate return. Your return can be lesser than FD sometimes, more than FD sometimes, but at least your capital is protected by putting some simple allocation like this. Okay? This can further be improved by defining the regime, like for example in inflationary environment, for example gold and real estate does really well, तो आप इक्विटी से थोड़ा एलोकेशन कम करके गोल्ड या इसमें करो तो आपको बेटर रिटर्न आ सकता है. सच इंप्रूवेशन आर पॉसिबल. ओनली थिंग आई वांटेड टू ड्राइव अ पॉइंट कि बाय सिंपली इंट्रोड्यूसिंग डाइवर्सिफिकेशन यू हैव एक्चुअली एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ अ लूजिंग ईयर. और ये कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है. So, as I said, there are 4 pillars of generating all-weather returns. First is diversification. Second is, anybody? What is the second pillar? Anybody remember? Non-correlation. Third is leverage. And fourth is hedging. Fourth is most important. जो मिलन भाई ने बोला है वो अपने को दिमाग में रखना है. Fourth is the most important, hedging. So, this is a sample which is showing that any random asset, we have taken any random asset, if you are holding only one asset, how much it can draw down. So when I say draw down, if you bought something for 100 rupees, how much it can generally go down and all that. On the past data, some random asset was selected, usko test kiya, so a single asset can draw down say 19% for example. But the moment you hold 100 assets, the moment you diversify into 100 assets, that 19% goes down to 2%. That is what the diversification into non-correlated asset does. And the moment you increase this, so when I say asset, your one strategy can be asset. Like for example, Vishal's one strategy till 3 o'clock can be one asset. Second strategy after 3 o'clock can be other asset. Somebody like Saurabh's strategy can be one asset, जो उसने spread बनाया अभी, या कल उसने अंकुश ने जो बताया, that can be one asset. So if you
diversify across 10,000 assets, your drawdown reduces to 0.10 percentage. This is the level of certainty you will get. And I'll show you some of the charts why these hedge fund managers are so confident about generating every year return is because of this. Because they are diversified across as many assets as possible. They are not concentrated in one asset. Like even cryptocurrency में जैसे Luna zero होगा, लेकिन Bitcoin zero नहीं हुआ है. Bitcoin is still trading. लेकिन अगर आप खाली Luna में होते तो zero हो जाता. तो first pillar जो diversification है, this is the impact of the diversification, and it shows 95% of drawdown will be within 19% if you are holding one asset. But the moment you hold 100 assets, your drawdown will reduce to 2%, and the moment you hold 10,000 assets, your drawdown will almost go to zero. 0.10 is, to my mind, is zero only. Well, all 365 days can be positive. Near risk free हो गया है. 0.10 तो कुछ भी drawdown कभी भी हो सकता है. The second important pillar of generating all-weather returns is non-correlation. Okay, what is a non-correlation? Can anybody? Devang bhai, what is non-correlation? Now, please take the mic for the benefit of audience. Gold and equity, if one is rising, the other one is falling, or it's basically the correlation in statistical norms. It's negatively correlated. Negatively. Yes, Govind bhai, आप. नॉन कोरिलेशन का मीनिंग होता है पाकिस्तान में बारिश हो रही है, इंडिया का एग्रीकल्चर, सो देयर इज नो रिलेशन एट ऑल बिटवीन देम. सो जो देवांग भाई ने जो एग्जांपल दिया भाई गोल्ड एंड इक्विटी फॉर एग्जांपल, दैट इज नेगेटिवली कोरिलेटेड. व्हेन आई से नॉन कोरिलेटेड, इट मींस एन असेट इज मेकिंग मनी, द अदर असेट इज मेकिंग मनी. ओके, ये पॉजिटिव हो गया. वन असेट इज मेकिंग मनी, अदर असेट इज लूजिंग मनी. One asset is losing money, other asset is making money, and vice versa. So this is random हो गया कि ये कभी भी ये भी पैसा बना रहा है, कभी भी ये भी पैसा बना रहा है. If you run a correlation, and I don't have much time to go into detail, you can actually run correlation on daily returns and find out what is the correlation between the strategies. So the moment you diversify into non-correlation, your drawdown reduces. That is a very, very unique concept, and all of us are surviving on this concept currently. This is a very powerful slide by Mr. Ray Dalio, which is popularly known as a holy grail of investment, which says that as you increase your number of assets from 1 to 20, your standard deviation of your portfolio goes down from 10% to almost 2%. You can actually reduce your drawdown by 80% by diversifying into 20 assets. So when I say diversifying 20 assets, like for example Jainam का जो desk है, why are they so stable? Why are they making money every week? Why are they making money every month? Anybody want to take this? I know they are making money every week. I know they are making money every. Yes, they are diversified across 4,000 traders. They've hired 4,000 independent mind. Those traders are making use of optimum leverage that is available in system provided by Jainam, and Jainam is making use of optimum leverage provided by the exchange. Okay, that is why their ROI, without looking at their number, I can tell you is going to be very high. So जो चारों पिलर है, वो चारों पिलर वो लोग यूज कर रहे हैं. What are they using? They are using leverage, they are using diversification, they are using non-correlation. मतलब एक ट्रेडर कभी पैसा बनाएगा तो दूसरा ट्रेडर पैसा तोड़ सकता है, या तो दोनों बना सकते हैं, दोनों तोड़ सकते हैं. मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है. आज आपका दिन अच्छा है तो उसका खराब हो सकता है, लेकिन उनके हर एक ट्रेडर के पास एज है. So individually 90% of his trader must be profitable. 10% जो नए आते हैं, जो सीखते हो, शायद लॉस करेंगे, उसका भी लिमिट होता है. लेकिन 80-90% of the trader will be positive because they have an inherent edge. So let us convert those traders into strategies that we use. Right? So first condition is each strategy should have an edge, first of all. Second condition, they should not be very highly correlated, because if the strategies are
correlated more than 0.6%, you can only reduce the risk by 15%, not much. So even if you trade 1,000 strategies, or maybe you trade 1,000 stocks, your risk will reduce only by 15%. But if you want to reduce your risk by 80%, then you have to use correlation which is very, very low, like 0.3, 0.2, 0.0, maybe -2. That is the key statistics. And this statistic, this side shows that if, like Kalmar ratio we always calculate, right? कल से 4 या 5 जन ने Kalmar ratio calculate किया, which is return to drawdown. Suppose your return to drawdown is say 0.25 and you are using only single strategy or a single asset, then you have a 40% probability of a losing year, that you have a losing year. But as you increase number of assets, the return to risk ratio increases, it becomes 2.5, and probability of a losing year, which was 40% earlier, goes down to 1%. So this is the holy grail for all of us who are doing long short strategies, and I urge them to run correlations between the strategies, like Vishal has shown what are the correlation of your strategy? Minus 0.04, right? That is why it controlled the drawdown and it increased the return, because they were using the same margin after 3 o'clock. That is the reason, because the correlation, so any long only portfolio, any investment has a zero correlation with long short strategy. So anybody having large portfolio should explore long and short. It will reduce your risk at least by 50% by just introducing long short along with long. I will show you that data also. Anybody having large portfolio should include long short to their strategies. Yes. Can you take up the mic for the benefit of audience, please? Correlation, when we say, correlation itself is changing value. It is never a static. So if we talk about, say, India VIX and Nifty, at times there could be, like, it's a negative correlation, we all know. But there are patches in between wherein it goes positive also. There are patches in between, the negative correlation also reduces. Yes, what does it prove? That the correlation is not one, first of all. What it also proves that correlation is not necessarily negative. Correct. Sometimes it is positive. So this will result into some sort of a non-correlation. That is what we are looking for. So along with correlation, doesn't the co-integration make sense? Because correlation is like, I'm talking about whether the asset is positive, the second asset. So the correlation is used in two ways. One, either you run like based on their movement. What we as a long short trader, as a multi-strategy player, we run correlation on the daily returns. So if the income stream of two strategies or maybe two assets or maybe whatever the instrument you are trading, if it is non-correlated, it will invariably result in reducing risk. Suppose ये strategy का 50% रिटर्न है, ये strategy का 50% रिटर्न है, यहाँ समझो 30% ड्रॉडाउन है, यहाँ समझो 25% ड्रॉडाउन है, ठीक है? ये दो स्ट्रेटजी है और मैंने कोरिलेशन रन किया एंड सपोज कोरिलेशन केम 0.25 या 0.3 आया. If I combine these two, my average return, अगर मैंने डिवाइड कर दिया मेरा कैपिटल, my average return will still be 50. But मेरा जो रिस्क 30% था और यहाँ 25% था, it will reduce to around 15%. So fourth pillar was hedging, and of course रिस्क कंट्रोल का जो दो पिलर है, डाइवर्सिफिकेशन एंड नॉन कोरिलेशन. पहला आपने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन सिंपल खाली वेटेज देने से डिफरेंट एसेट को डाइवर्सिफिकेशन करने से एवरी ईयर पॉजिटिव होता है. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. सेकेंडली नॉन कोरिलेशन देने से रिस्क जो है वो पॉजिटिव रिटर्न आया लेकिन इन बिटवीन ड्रॉ डाउन आया होगा, टोटल पोर्टफोलियो पे माइनस हुआ रहेगा, तो वो भी मिनिमम करने के लिए वी हैव टू यूज नॉन कोरिलेशन. एनी क्वेश्चन सो फार? Anybody not following? Anybody wants to understand? ठीक है. Brilliant, sir. Brilliant. Either all are with me or none of them are with me. I don't know. ठीक है. Let's go. So this is the correlation matrix. See, for whatever period you take, Tina, correlation will change. Okay. So when we have taken correlation between 2011 and 2021,
next decade can be different, but it won't be drastically different. Like S&P के साथ अगर ये क्या है? What is this? Investment grade bond. If you see S&P के साथ investment grade का correlation क्या है? That is why equity and bond का जो portfolio होता है ना, वो generally negative नहीं जाता है, because उसका correlation ही 0.02 है. दूसरा किसके कैश के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत कम कोरिलेशन किसके साथ है? करेंसीज के साथ है. मतलब ये सब चीज़ आपको करना चाहिए. इफ यू आर हैविंग अ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो ऑफ S&P, you should trade currency also, you should trade equity market neutral because correlation is very less. You should avoid all this because correlation is 0.85, 0.8. Rakesh, your question. Yes. So generally, in another fund, Quantopian, where we were contesting, they used 0.3 as a benchmark for the cutoff for the correlation. मतलब 0.3 I think के नीचे. anything below 0.5 0.5 तक will reduce your drawdown. Will reduce. Then it the is low- best to have very less correlation. Right. Minor negative is very best. Surely. नहीं मिलता. See, beyond the point, you will not get many non-correlated things. So you will have to start looking for less correlated things. See, 0.0 वाले आपको 1, 2, 3, 4, 5 कितने strategy मिलेंगे? Then you start looking for चलो भाई 0.10, 0.15, 0.20, but you don't go above 0.5 because there is no real benefit to that, right? Now the next pillar, which is responsible for generating high returns, is leverage. And इसको समझेंगे कैसे leverage किया जा सकता है. And leverage से परहेज नहीं करना है, लेकिन leverage से दोस्ती करना है. उसको समझ के करना है, तो those who really understand उनको ही करना है. This is the chart which shows if an asset is generating 0.015 per day annualized for 30 years, your compounded annual return is 4% per annum. Okay? So any asset which is generating 0.01% per day, your annualized return is 4% per annum. बराबर है? Suppose I get an access to the leverage to buy this asset, okay? And if I leverage 12.5 times, this asset has a probability of generating 60% return. So key for generating return, anybody who is generating better return than underlying, समझो निफ्टी ने 10% दिया या कोई स्टॉक ने 12% दिया, anybody generating more return than that is making use of leverage and has to make use of leverage. So what it tells you is, like, suppose you have a 5x leverage and what you have 10x leverage, your return profile will change. So आपको return बढ़ाना है तो आपको leverage तो लेना ही पड़ेगा. Like most broker को leverage कैसे मिलता है? कि उनको margin मिलता है बैंक गारंटी पे. बैंक गारंटी पे उनको रखना है 50% FD. तो आपको तो आधा ही कैपिटल आधा उधर हो गया. कॉस्ट आता है 1%. वही मार्जिन वो लैंड करते हैं 12% पे या 15% पे या 6% पे, डिपेंडिंग ऑन योर टर्म्स. तो दैट इज वेयर द लिवरेज इज बिल्ट. तो यही चीज कोई भी एसेट के साथ किया जाए. लेकिन द की इज दिस इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग सिस्टम दैट मैक्सिमाइजेज रिटर्न. इट्स नॉट अबाउट मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न. दिस इज अबाउट क्रिएटिंग रिस्क सिस्टम्स दैट मैक्सिमाइज एक्सेस टू द लिवरेज. सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फ्यूचर लेता हूं तो उससे बैंक निफ्टी का फ्यूचर का 20% है, 20% है मार्जिन, 5 टाइम्स लिवरेज हो गया. What if I convert that into a spread, buy call, sell call? मेरा leverage 12.5. What if I simply buy a naked call? What is my leverage? 33 times? Presuming कि भाई एक साइड का 3% प्रीमियम है monthly, my leverage is 33 times. So return is not an issue here. Because you have access to leverage, because you can leverage. अभी वो कॉल लेके आपको कैसे रिटर्न, आपके पास क्या है, वो आपके क्या सिस्टम है, वो आप पे है. लेकिन आपके पास 33% लीवरेज, 33 टाइम्स लीवरेज है, तो आपका रिटर्न 120% भी आ सकता है. दैट इज वाई ऑप्शन बायर का ROI बहुत हाई होता है, लेकिन उसका ड्रॉडाउन भी बहुत हाई होता है. ड्रॉडाउन भी उतना ही 50, 60, 70, 80% ड्रॉडाउन होता है. तो वहाँ कैपिटल बोले ना, अंदर कैलकुलेशन नहीं, सी इट मे नॉट मैच द एग्जैक्ट कैलकुलेशन,
द ओनली पॉइंट वी आर ड्राइविंग होम इज अगर कोई अंडरलाइन का जो रिटर्न है उसको जितना लिवरेज मिलेगा उतना रिटर्न वहाँ पॉसिबल है। अभी आपको करना क्या है, रिटर्न मैक्सिमाइज करने के बाद आप कैसे कर सकते हो रिटर्न मैक्सिमाइज? लिवरेज से कर सकते हो। वी हैव अग्रीड ऑल ऑफ अस। रिस्क को कंट्रोल करना है। आपको मैक्सिमाइज तो रिटर्न किया, लेकिन इफ देयर वाज अ बेसिक बुलेट दैट इज इट, व्हाट इज दैट? कंट्रोलिंग रिस्क। हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल रिस्क? वन, वी आर डाइवर्सिफाइंग। सेकंड, वी आर यूजिंग नॉन कोरिलेशन। एंड फाइनल, so that is why it is calculated that Zuckerman जो है जिन्होंने बुक लिखा है द मैन हु सॉल्व्ड मार्केट, उन्होंने रिवर्स कैलकुलेट किया कि 66% पर एनम 30 इयर्स के लिए जिम साइमंस कैसे जनरेट किया उसने। तो ही हैड एन एक्सेस टू दैट 12.5 टाइम्स, दैट इज व्हाई ही कुड जनरेट 66%। मतलब उनका खुद का रिटर्न S&P से कम है अगर अनलीवर्ड है तो। नोशनल पे, आप नोशनल पे करते हो ना, जो भी आप कैलकुलेशन कौन सा नोशनल पे करते हो, नोशनल पे 5% से भी कम है, लेकिन उसका रिटर्न क्योंकि लिवरेज यूज किया, लेकिन लिवरेज यूज करने में जो रिस्क आता है वो रिस्क नहीं आया क्योंकि डाइवर्सिफाइड था। एट वन पॉइंट, लाइक इफ आई यूज वेयर इज दैट स्लाइड, ओके, या सेम टाइम ओवर लिवरेज कर लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट दे हैड एसेंशियली स्प्रेड का पोजीशन था उनका, आर्बिट्राज था, एक ही रिक्वायरमेंट था कि भाई उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करना है। इन बिटवीन कुछ इवेंट हुए, इंटरनेशनल कुछ तो भी हुआ और स्प्रेड बढ़ने लगे, तो दे कुड नॉट प्रोवाइड फॉर द मार्क टू मार्क भर देते, मैच्योरिटी पे होल्ड करते तो पूरा पैसा घर पे आता था, जो शायद डेल्टा न्यूट्रल में भी होता है। अगर आप मार्क टू मार्क संभाल लेते हो तो लास्ट में वेगा जीरो होता है, आपका सब पैसा घर पे आता है। लेकिन इन बिटवीन जो मार्क टू मार्क भरना पड़ता है, इफ यू रन आउट ऑफ मनी, कल यही क्वेश्चन था आपका, वही लॉजिकल, बराबर है, इफ यू रन आउट ऑफ मनी देन यू आर आउट ऑफ द गेम, राइट? सो एक ऑप्टिमम लेवल का लिवरेज क्या है और उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्राज का पोजीशन में भी आप बैंकरप्ट हो सकते हो स्प्रेड अगर बढ़ गया तो। हाँ, शायद वही स्प्रेड, मुझे सो फार एज आई नो, मैंने डिटेल में ज़्यादा उसमें स्टडी नहीं किया, वो स्प्रेड बाद में वॉरेन बफेट ने ले लिया एट सम कॉस्ट, एंड जो पूरा आर्बिट्राज का प्रॉफिट था वो वॉरेन बफेट को रियलाइज हुआ, बिकॉज ही हैड लिक्विडिटी एंड दिस गाय डिड नॉट हैव लिक्विडिटी। बेल आउट मेरे हिसाब से ऐसे हुआ था। हाँ, ओके, जो भी था, मतलब somebody took over the spread, right? हाँ, जो भी था, whatever the reason, मतलब 25 टाइम लिवरेज था, इसके कारण वो लोग बैंकरप्ट हो गए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको हम कैसे लिवरेज यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटेजी ट्रेडर और लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर। मैंने आपको दिखाया कि मेरा सिस्टम, ये लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी है मेरा, जो खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। 27% रिटर्न है, 41% ड्रॉडाउन है, 0.65 काल्मर है। इट इज़ मैचिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर। मैं फ्राइडे को खाली 5 मिनट काम करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ, 5 ही मिनट, ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। और ये कोई भी स्टेटिस्टिक हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हम खुद लाइव ट्रेड कर रहे हैं और यही बेसिस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग ओनली सिस्टम है। काल्मर मेरा क्या है, 0.65। द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस लॉन्ग शॉर्ट, मैंने क्या किया, यहाँ खाली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ कैश मार्केट में, मैंने स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट चालू कर दिया। मतलब क्यों, मार्केट हमेशा तो ऊपर जाता नहीं है, मार्केट नीचे भी तो जाता है, तो व्हाई नॉट आई मेक यूज ऑफ। सो वी क्रिएटेड मॉडल फॉर लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स, दिस इज लॉन्ग शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स। रिटर्न मेरा ऑलमोस्ट 27 का 24 हुआ, लेकिन जो मेरा पेन था ना 41%, वो हो गया सीधा 12%, ठीक है। अंकल पॉइंट जो बोलते हैं, अंकल पॉइंट जो कल भी बात हुआ था, जाए व्हाट इज योर अंकल पॉइंट, राइट। सो अंकल पॉइंट यहाँ 41 था और यहाँ 12 हो गया। व्हाट वी डिड विज, अगेन दिस इज अ सिंगल स्ट्रेटेजी, सो वी इंट्रोड्यूस मल्टी स्ट्रेटेजी ऑन इंडाइसेस। दिस सिस्टम वी आर ट्रेडिंग 125 सिस्टम एज अ पैकेज इन वन स्ट्रेटेजी, 125 strategy within one strategy. Notional return without leverage is 16% and drawdown has reduced to 5%. So my uncle point, which was 41% here, which is the pain, जहाँ मैं
डर के सब स्क्वायर करने वाला हूँ, जस्ट रिड्यूस टू 5%. एंड माई काल्मर रेशियो विच वॉज 0.65. दिस इज द लाइव एग्जाम्पल. दिस एक भी मॉडल हाइपोथेटिकल नहीं है. वी आर यूजिंग ऑल दिस मॉडल लाइव. देयर इज अ लाइव मनी लाइव काइंड ऑफ राइडिंग ऑन दिस, एंड probably Yogesh bhai can vouch for that. He's now let us see how we can use leverage to advantage. ये तीनों ऊपर वाले सिस्टम है नॉन लीवर्ड है, मतलब आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये का ही पोजीशन है, ठीक है. नाउ मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो भाई 12% पेन तो मैं ले सकता हूँ, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना, तो रिटर्न बढ़ाना है. तो अगर मैं 12% पेन ले सकता हूँ, ये सिस्टम में खाली 5% पेन है, राइट. So I can actually take a leverage of 2.6 times. Got it? कोई confusion यहाँ पर? You understood how I arrived at 2.6? Because मैंने अपना पेन पॉइंट डिसाइड कर लिया कि 12% रिस्क में ले सकता हूँ. तो मैंने ऐसा सिस्टम निकाला जिसका रिस्क खाली 5% ही है. वो सिस्टम को मैंने लिवरेज कर दिया 2.6 टाइम. तो मेरा रिटर्न हो गया, क्या हो गया यहां पर, क्या था, ठीक है. ये लिवरेज के कारण होता है. फाइनली फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, हेजिंग, जो मिलन भाई ने बोला उससे बियॉन्ड मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. सो when we were deploying funds to our strategy called मोनालिसा, एंड मैं और योगेश भाई उनके घर पे बैठे थे. आई एम ए डायरेक्शनल प्लेयर और मेरा पोजीशन हमेशा ओपन रहता था. तो इस के राकेश तेरा पोजीशन में एज तो है, पैसा भी बनता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि रात का तेरा पोजीशन ओपन है. सो देन एट दैट पॉइंट वी काइंड ऑफ अराइव्ड एट अ मॉडल वेयर वी आर कंप्लीटली हेजिंग अ पोजीशन. हेजिंग से फ़ायदा क्या होता है? लाइक आवर करंट मॉडल्स आर ऑल ब्लैक स्वॉन प्रोटेक्टेड. ओवरनाइट 20% नीचे खुल गया, ऊपर खुल गया, बियॉन्ड द पॉइंट नुकसान नहीं होगा. हेजिंग से फ़ायदा क्या है? सबसे पहला आपका ओवरनाइट रिस्क निकल जाता है. दूसरा, ब्लैक स्वॉन प्रोटेक्टेड होने के कारण यू आर एबल टू यूज़ लिवरेज फ्रीली. आपको डर नहीं है लिवरेज यूज़ करने में कि भाई मैं 100 टाइम भी लिवरेज हूँ, लेकिन मेरा ब्लैक स्वॉन तो प्रोटेक्टेड है, 10% से मेरे को ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता. तो इट गिव्स मी स्केलेबिलिटी. दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू प्रोबेबली पीपल लाइक जैनम और मारवाड़ी टू डिप्लॉय दिस काइंड ऑफ 2,800 crore worth of margin in options, because उनका ओवरनाइट हमेशा विंग्स, इंट्राडे भी, फॉरगेट अबाउट ओवरनाइट, कवर होता है. तो जैसे 11 बजे अगर गोली किसी को लग भी गया, सर्किट भी लग गया, तो उनका जो रिस्क डिफाइन है उससे ज़्यादा पैसा लग ही नहीं सकता है उसमें. द ओनली पॉसिबिलिटी आफ्टर दैट रिमेन्स इज एक्सचेंज डिफॉल्टिंग और अ कंट्री डिफॉल्टिंग और सम सॉर्ट ऑफ दैट रिस्क. वो रिस्क में तो फिर सब हम सेम ही हैं. वो रिस्क में भी अगर आप जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, सर, दिस फॉर यू पर्टिकुलरली, सपोज यू डाइवर्सिफाई योर डेस्क इन US और समथिंग हैपन्स टू इंडिया, देन ऑल्सो दैट रिस्क इज ऑल्सो एलिमिनेटेड टू डाइवर्सिफाई जियोग्राफिकली. कि भाई श्रीलंका में हो गया, हो सकता है अपने लाइक अभी आई वॉज रीडिंग टर्की में 75% इन्फ्लेशन है. श्रीलंका के पास अभी पैसा नहीं है एनर्जी को इम्पोर्ट करने के लिए. अगर ऐसा कुछ हो गया तो इवन इफ यू आर बिलियनर्स, सडनली इट इज़ वर्थलेस, बिकॉज लूटफाट चल रहा है, सिविल राइट्स हो रहा है, समथिंग लाइक. तो इट मेक्स सेंस टू पुट पार्ट ऑफ योर वेल्थ ओवरसीज ऑल्सो इन इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. कंडीशन क्या है? देखो, हेजिंग फोकट में नहीं होता है, हेजिंग का कॉस्ट देना पड़ता है. कोई भी हेजिंग का तो सब, अगर मैं प्रोटेक्टेड ही हूँ तो सबको मज़ा आएगा ना, लेकिन वो मज़ा करने का एक सज़ा भी है, कॉस्ट है. तो आपको करना क्या है कि समझो मेरा हेजिंग कॉस्ट आता है 10%, 12%, 6%, डिपेंड, आपका पुट का कॉस्ट कितना, 5% है. अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 5% से ज़्यादा एज नहीं है सपोज रिटर्न, तो आपका स्ट्रैटेजी सर्वाइव होएगा क्या? नहीं होएगा. सो अपने को ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है जिसका एज हेजिंग कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है. देन वी विल नॉट माइंड सेक्रीफाइसिंग दिस हेजिंग कॉस्ट, ठीक है.
एंड इट गिव्स यू स्केलेबिलिटी. आप लिवरेज को एक्सेस कर सकते हो और स्केलेबिलिटी भी हो सकता है. Rakesh, I'll just pause you for a moment. As we have thousands of people also online watching from Money Control Yes. Pro, there's a question by Praveen Reddy that can you provide some back-tested option strategies which have very less correlation? Very less correlated. Yes, I can give Vishal strategy. Yeah, Vishal has given win yesterday. There you have it, Praveen. So you sell a straddle at 9:30, cover at 258, put a stop loss of 50%. ठीक है, and 258 को आप स्क्वायर कर लीजिए. 3 बजे नया straddle मारिए, उसका इंडिविजुअल स्टॉप लॉस 50% और उनका कोरिलेशन 0 है. ट्रिगर्ड एंट्री है, वॉट एवर ही वांटेड स्ट्रेटेजी मैंने दे दिया. कल विशाल का आप रिकॉर्डिंग देख लेना जिसको भी देखना है. I think Praveen is thanking you already. सो प्रवीण को बोलो उसको कोरिलेशन 0 है, वो यूज करे. एनीबडी वांट्स टू यूज 0 कोरिलेशन वाला है तो बिल्कुल यूज करना चाहिए. देखो ब्लैक स्वॉन कभी कभी होता है. जब तक अपन ने व्हाइट स्वॉन ही देखा है ना तो अपने को लगता है स्वॉन तो व्हाइट ही होता है. लेकिन एक ब्लैक स्वॉन आया ना, इट वैलिडेट्स, मतलब इनवैलिडेट्स ऑल द हाइपोथेसिस. ऐसा लास्ट 100 साल में भी, पैंडेमिक भी 100 साल में नहीं हुआ था ना. 1918 या 1919 में हुआ था. 100 साल के बाद हुआ ना. पावर ग्रिड फेलियर हो ही सकता है सर कभी भी, साइबर अटैक के कारण. देयर कैन बी अ फेक एलियन अटैक, नोबडी नोज, और देयर कैन बी एन एक्चुअल एलियन अटैक, नोबडी नोज दैट. किसी को पता नहीं है. इट कैन बी फेक, इट कैन बी एक्चुअल. लाइक conspiracy theorists will say it is fake, but some people can say it is actual. Like Area 51 in US is surrounding all the controversy. We'll not go into that. This is a very important chart. Yogesh bhai, jara just please. Devang bhai, ध्यान आप जो है. This is a cone chart of Bridgewater Associates. Okay, it's a hedge fund by Ray Dalio in his book called Principal. ये एक chart दिया हुआ है. What it tells you is, way back in 1990, when he formed his hedge fund, he projected his return for the next 25 years. So this central line is his projected return. This is 1 standard deviation from return, upside and down. This is 2 standard deviation return, upside and down. ठीक है? This was समझ गए? And this black line is actual return for the next 25 years. So 25 years in advance, he projected my return will be this. And look at the black line, which is adhering to central line, which is expected return, and it is oscillating around 1.5 standard deviation. It's not moving beyond 1 standard deviation. This is the level of confidence he has got because he is trading in non-correlated assets, which are adequately diversified. That is why, with reasonable certainty, I am not saying 100%, with reasonable certainty, you will be able to project your future returns. So that is one of the projects that we have given to our team. Project our return for the next 10 years and project it live, give it to your client live. This is where we are. And Bridgewater Associate Ray Dalio says, if we are beyond 2 standard deviation, you should take your money away from us. You take it back. If you are beyond 2 standard deviation, then we are not doing good. Probably you can take your money away. But so, even if there is a losing year, but we are, suppose we are well within 2 standard deviation, then you should not remove your money. No, he is saying plus भी नहीं चलेगा. Plus भी नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि बोलता, then you are not good at estimating what you are doing, right? वो प्लस भी नहीं चलेगा, माइनस भी नहीं चलेगा. माइनस तो डेफिनेटली नहीं चलेगा. चलो प्लस हो गया तो कोई पूछता नहीं है. माइनस हो गया तो सब पूछने वाले हैं. प्लस में कोई पूछता नहीं है. ठीक है? So this is taken from his book, where as a team they had discussed कि भाई हम 25 years in advance देंगे. तो किसी ने बोला सर ऐसा तो करेंगे तो क्लाइंट तो भाग जाएंगे. अगर 2 standard deviation तो भाग जाएंगे तो भागना ही चाहिए. I will recommend कि भाग जाओ आप, क्योंकि I am not doing as I am asking कि मैं ऐसा करूंगा या बता रहा हूँ मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं हो रहा है मेरे से, तो probably I should return myself. Why should we be worried? And secondly, we are setting the expectation right. We are telling them in advance there can be a negative year, but it will be well within 2 standard deviation of what you are expecting as a return. So you are setting the expectation right. And this is what we should, as individual organization, we should do. We should press ourselves against the wall
in projecting our return and try and deliver on the returns. That will probably push us to actually backtest in real life with actual slippage, actual transaction cost, so that we are accountable to the client. कि भाई मैंने 50% बोला है, मेरा 45 हुआ, तो that is okay, that has happened in the past. But मैंने 50 बोला और -5 हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, because many of newcomers underestimate जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट और जो स्लिपेज है, जो अभी जिसने तन्मय ने वगैरह ने जो प्रेजेंटेशन दिया. So मैंने जैसे बोला कि हम कुछ भी जो दिखाया है वो हाइपोथेटिकल नहीं है, वी आर वॉकिंग द टॉक एट CWA, एंड ये हमारा लाइव मॉडल है जो मोनालिसा 5 करोड़ विच वॉज लॉन्च्ड इन 15 जनवरी 2021. वी आर लिवरेज 5 times. इट इज़ कम्प्लीटली रिस्क डिफाइंड, वायर डिफाइंड है, ब्लैक स्वैन प्रोटेक्टेड है, कैपिटल डिप्लॉय इज 5 करोड़. दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ रिटर्न. 80% मेनी पीपल रिकमेंड मी कि इतना ज़्यादा रिटर्न मत दिखाओ, don't set wrong expectations and probably you are pushing yourself. But ये मेरा मॉडल दिखा रहा है कि ऐसा रिटर्न आ सकता है क्योंकि लिवरेज है 5 times. रिटर्न आएगा, लिवरेज है, रिस्क मेरा 10% है, ये क्लोज टू क्लोज रिस्क है. व्हेन आई से क्लोज टू क्लोज रिस्क मतलब कई महीने में ऐसा होता है कि यू आर डाउन 15% बट यू एंड द मंथ विथ 10%. So when you see monthly equity curve, you are down by 10.5%. This is the risk that we have in this product. Calmer ratio is 7.75. This was shown live in interview with Vivek Bajaj. जब भी मैंने अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ था इलन मार्केट में, तभी मैंने बोला था ये मॉडल में जनवरी में लॉन्च किया है. सो वी आर टॉकिंग अप्रैल, बाद में लाइव क्या रहा. दिस इज, इसमें बैक टेस्टेड में क्या है, देयर आर नो नेगेटिव क्वार्टर्स, ओनली टू नेगेटिव क्वार्टर्स है, 13 नेगेटिव मंथ है, मतलब मोर देन 85% ऑफ मंथ्स आर पॉजिटिव, only 2 quarters are positive. Standard deviation is 36% and Sharpe ratio is 2. This is the back tested results. Now let us see हमने जो बोला, जो हमारा कौन चार्ट क्या बोलता है, where we stand on कौन चार्ट, right? This is what the कौन चार्ट is. This is absolutely live. जनवरी से लेके 31st May तक अपडेटेड है. We have generated around 75% with monthly drawdown of 2.61. This is the risk of 2.61. Which month it was? I think it is May 21. After that, we never had a negative month. We had a flat month, and again we had a negative month here in February 2022, and returns are. After like what we try and do is we keep on researching and we keep on adding system, because मेरा तो 100 asset मेरे को तो add करना है. Currently I am at say 9 strategies. I want to go to 100 strategies. So every year there is a research pipeline. Every 2-3 months we add. So that is why our Mona Lisa keeps on growing in terms of margin requirement. 5 का अभी current अभी if you see the, this is where the difference is जो आपने कल दिखाया था, right? ये जो इक्विटी कर्व है वो डेली है, राइट? लॉट ऑफ नॉइज, अप्स एंड डाउन, ये पॉइंट टू पॉइंट बहुत ऊपर है. द मोमेंट यू कन्वर्ट इनटू मंथली, दिस इज द कर्व. द मोमेंट यू कन्वर्ट देन इनटू क्वार्टरली, दिस इज द कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज व्हाट वी शुड लुक एट. देन वी लॉन्च मोनालिसा 2.0, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 8 है. इसका ओरिजिनल 15 जनवरी से ही चालू है, एंड वी कीप ऑन एडिंग कैपिटल. Let us see where we stand here on the कौन चार्ट. उसमें 13 महीना नेगेटिव था, इसमें बैक टेस्टेड में खाली 8 महीना नेगेटिव है. सो व्हाट वी डिड इज वी एडेड 3 crore मार्जिन, वी एडेड फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज, वी eliminated the possibility of 5 negative months. ठीक है? So we are now at 8 possible negative months. We reduced the risk of closing from 10% to 4.73 here. मेरा रिस्क रिड्यूस हुआ, मेरा नेगेटिव मंथ्स कम हुआ, जो 2 नेगेटिव क्वार्टर थे वो भी निकल गए. दिस इज द बेनिफिट ऑफ एडिंग न्यू स्ट्रैटेजीज, राइट? वहाँ उसमें क्या रिटर्न है वो हमने चालू किया सितंबर 2020 में. 5 का हमने 7 किया, 7 का अभी 8 किया है. तो हुआ ऐसा कि जब भी हमने 5 का 7 किया, 7 का 8 किया, वो जो नई स्ट्रैटेजी एड किया ना वो सीधा ड्रॉडाउन में चला गया. तो हमारा जो रिटर्न था 5 करोड़ रुपए, 75%, इट केम डाउन टू 50%.
ठीक है. इंट्रा मंथ ड्रो डाउन 13%, मतलब महीना 13% तक ड्रो डाउन हुआ, लेकिन अगेन वो ऊपर आ गया. ठीक है. दिस डेली इक्विटी, दिस इज मंथली इक्विटी एंड दिस इज, लुक एट सम फर्दर स्टैटिस्टिक्स. चलो हम कंपेयर करते हैं. बेंचमार्क बोलते हैं. बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क से परफॉर्म किया नहीं किया. बेंचमार्क से अपन ने चेक किया. निफ्टी 15 जनवरी से 11% अप है, 14% ड्रो डाउन हुआ. काल्मर रेशियो 0.79, मिड कैप 21% अप, स्मॉल कैप 17% अप. रेशियो सब देखिए 1.62. लुक एट आर CWA इन्फिनिटी मोनालिसा 1, 55% एनुअलाइज रिटर्न, 75% 17 महीने का था. 3.38, 2.89, close to close basis. Look at the Kalmar. Look at the Kalmar here. Kalmar of 21, risk of 2.61, return of 55 and 30. This is possible if you keep on adding strategy with decent edge, which are diversified enough into instruments, into indices, into stocks, into options. Within options, you can have several strategies, like 920 straddle भी हो सकता है, 1020 straddle भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी होता है. इफेक्ट क्या आता है आपका, जो पेन पॉइंट था ना, वो कितना रिड्यूस हो गया देखो मेरे को. अगर आप यही चीज ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट करोगे तो रिटर्न और बढ़ सकता है. तो दिस आर द पॉसिबिलिटी. और ये होता है क्योंकि हमारा दिस इज द कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ द स्ट्रेटजीज विच यूज. सो यू सी लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज आर लेस कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड. लाइक फॉर एग्जांपल S2 से स्ट्रेटजी 2 से स्ट्रेटजी 9 देखिए कितना कम कोरिलेशन है, कितना कम है ये देखिए. दिस इज 0.08. So when some strategy is making money, other strategy is losing money. Net, both strategies have a positive expectancy and both can actually make money. And as I add more strategies, like currently we are under research for around 3 strategies which will require a margin of another 6 crore. So when I make a probably next presentation at Algo Convention, the product will be 15 crore kind of, right? And believe me, there are people who are looking for this kind of. All the credits and sources, I have done a lot of kind of research from all these websites and all these books and all that. These are the credits and these are my contact numbers, and that's about it. Thank you very much. So I don't need to say how great the presentation was. It's evident. Questions? Any? Intraday drawdown was around 16%. 1 minute. Yeah. Intraday drawdown was 16%. Intra-month. Intra-month, okay. Intra-month. So if someone is investing, I think 8 crore was a Yes. requirement. Okay. वो 16% drawdown कैसे झेलते वो बता दो. How do you So- convince? Yeah. Can I invite you, Yogesh bhai? You please answer him because he is asking for the person who showed that this kind of a drawdown. So if you can answer that. Please give it the mic to him, please. Please, just take the mic, please. What is your question? You ask him. Yeah. So my question is that intra-month. How do you consume a 16% drawdown, right? Yeah, because Yes. most But of when the. we are in equity, all our life we have been in equity, we have been seeing 50% drawdowns. What is 16%? I don't think there is any issue. And why we could sustain? Because अप्रैल के पहले वीक में अपना 10% अप था. Right. जो 10% अप था वो ड्रॉ डाउन हुआ. सो पॉकेट से कुछ नहीं गया, जो आया था वही वापस गया. लेकिन आप मंथ देखिए ना, यू लुक एट क्लोजिंग मंथ, इट एंडेड पॉजिटिव. अप्रैल मंथ इज पॉजिटिव, मई मंथ इज That I agree. इससे Yeah. भी बड़ा लाइन अच्छा ज्यादा बड़ा वो है जो उन्होंने अपना प्रिपरेशन बताया. फर्स्ट मंथ अगर 10% प्लस नहीं भी जाता हाँ. तो ही कोरिलेटेड की मार्केट 60% जहाँ टूटता है वहाँ 16% क्या है. यस. दैट वाज मेकिंग सेंस. सो माइंड सी अपन ने रिड्यूस कितना कर लिया. जो 60, 70, 80% ड्रॉडाउन को अपन 10 सी, अगर आप जीरो पे जाना चाहते हो, जीरो तो जाएगा नहीं, समझे 1% लाना है तो आप करो 1000 असेट्स. तो दिस इज एन आइडिया विच कैन क्रिएट $1 billion हेज फंड ऑल्सो, कि यहाँ आप मल्टी एसेट करो, करेंसी करो, कमोडिटी करो, विद इन कमोडिटी ईच इंस्ट्रूमेंट में मल्टी स्ट्रेटजी करो.
करेंसी एक पैर में मल्टी स्ट्रेटजी करो, दूसरे पैर में मल्टी स्ट्रेटजी करो. दिस इज हाउ यू बिकम. पीपल कैन आस्क हाउ 10,000 assets can happen. It can happen because USD INR can have 20 strategies. USD Euro can have 20 strategies. Euro and pound can have 20. Like Nasdaq can have 20. Dow Jones can have 20. वहाँ के option can have 1,000 strategies. तो if anybody wants to create a hedge fund out of it, it's possible with this concept. और यही 4 पिलर पे आपका रिटर्न आएगा और जरूर आएगा. मैं बोल रहा हूँ आएगा, क्योंकि ये हम लोग 4 साल से कर रहे हैं. काफ़ी हम लोग लर्निंग का भी रहा, काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये 4 पिलर आपको रिटर्न देंगे देंगे और देंगे. And this 5x leverage is Yeah. मैं ही बोल रहा हूँ. ना बोला ना, कोई बात नहीं. It is like everybody is getting benefit out of it. So this 5x leverage is actually you're getting from the broker or is it? नहीं, एक्सचेंज दे रहा है ना. एक्सचेंज तो मार्जिन ले रहा है मेरे Only से. futures and अच्छा, मैं वो 50-50 कैश कोलेटरल का बेनिफिट भी नहीं गिन रहा हूँ मैं. अगर आप देखने जाओ तो 10 टाइम लिवरेज हो सकता है. अगर आप आपका स्टॉक पड़ा है वो डाल दो, 50% कैश रखो तो 10 टाइम लिवरेज हो गया. तो आपका फंड डिप्लॉय पे तो कुछ रिटर्न नहीं. अच्छा, वो आपका एफडी भी रख सकते हो तो 5.5-6% में तो वो एफडी भी है. सी वो नंबर्स दिखाएंगे तो मुझे सब भगा देंगे यार से, बोले 100% रिटर्न आ रहा है, जो पागल हो गया ये, तो भगा देंगे. तो वो सब नहीं बात करेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब ओवरऑल 5 टाइम लिवरेज तो अवेलेबल ही है फ्यूचर्स में. एनीवन एल्स? Thank you, Sajid.